Namaskar, Gupta Sahib, and Alok. Thanks to you and your team. For some of our colleagues who might not know the background, it may be useful for me to quickly recap. Hindi English दोनों में mixed, I guess. मैं शुरुआती रूप में रहा हूं और बुनियादी रूप से हूं एक मेडिकल डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट. Also got training in public health, but I also have a lot of interest and willingness to learn in the issues of disability in all aspects. और ये मेरा सौभाग्य है that I've been with Manovikas team for quite some years now. Mostly academic institutions में निमेश, एम्स और इबास में काम करते हुए, as well as supervising private sector and NGOs in the field of mental health. Lot of interest in issues of disability as well as specific topics like this. लेकिन हाँ, I must also say, and with all respect and only in half joke, that unlike many of my psychiatric colleagues, I am not primarily a sexologist. हर शहर और कस्बे में अब साइकियाट्रिस्ट के साथ साथ लोग अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट भी बताने लगे. I am saying that only half joking and half seriously because it conveys two things to me. One, it conveys the need for psychiatry and psychiatrists to destigmatize themselves and make the society accept that they also deal with issues other than core mental health problems. But more importantly, what it also conveys is that there is a lot of unmet need on issues of sexual medicine or sexual related behavior in the society. वो जो बिल्कुल क्वैक और गैर कानूनी, गैर लाजमी एजेंसीज दिल्ली को लेके बहुत सारे शहरों में और कस्बों में चल रही थी, वो अभी भी चल रही है. लेकिन उसकी एवज में वैज्ञानिक रूप से मेडिकल डॉक्टर, एंट्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या और कोई स्पेशलिटी और साइकियाट्रिस्ट अब कम से कम समाज में आगे आके सेक्सोलॉजी की और सेक्सुअल मेडिसिन की ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ये एक सच्चाई मुझे इससे दिखती है. और इसको मैं इसे भी मेंशन कर रहा हूँ कि जैसे गुप्ता साहब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि आई विल ट्राई एंड कवर सोशल एस्पेक्ट्स जो लार्जर रियलिटी है, as well as then come to the specific topic जिसमें I am very interested. Such I wish I could attend all 3 days. हकीकत ये है कि सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में मानव जाति में अलग अलग दौर में, इतिहास में बहुत टैबू रहा है. आप में से शायद, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है बहुत कम साथियों को ये ध्यान होगा कि 19वीं सदी के आखिरी दशक में और 20वीं सदी के पहले 2 या 3 दशक में जो सबसे बड़े साइको एनालिस्ट छाए रहे मानस पटल पर विश्व के, और जिनको कहा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड. Essentially, Sigmund Freud की सारी theories came out of the European British reality of that time, the Victorian era as it was called, रानी विक्टोरिया के वक्त में. और उस दौरान सेक्स के बारे में दूर दूर तक हिंट करना, फॉरगेट बात करना बिल्कुल वंचित था. In almost all classes, except for perhaps a few labor class or proletarians, as George Orwell says, proletariat as. तो ये प्लीज गौर करें कि अलग अलग संस्कृति में, एक ही दौर में अलग अलग संस्कृति में भी ये रहा है. लेकिन कुछ संस्कृतियों में खासकर वो जो ऐतिहासिक सच्चाई है कि सेक्स को टैबू समझना है, सेक्स को संदूक में डाल के रखना, उसको गलती से भी बाहर नहीं आने देना, उसको न दिखाना है न देखना है, ये मानव वृत्ति रही है. इच्छनीय नहीं है. पिछले कुछ दशकों में हम सब समझने लगे और अमेरिका की संस्कृति ने, अमेरिका के कल्चर ने इसको एक और नया मोड़ दे दिया है सेक्सुअलिटी को. लेकिन ये भी समझे कि वो जो अमेरिकन का सेक्सुअलिटी का और बाकी सामाजिक मोड़ आए वो थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद वो स्विंगिंग 60s आया. फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल नेचर, फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग मनी, एंजॉयिंग योरसेल्फ इन लाइफ फिजिकली और विच एवर वे. तो एक एनालिसिस मैं पिछले कुछ हफ्तों में 1-2 जगह ये भी कर चुका हूं कि जो दौर यूएस में स्विंगिंग 60s में आया था,
वो शायद इंडिया में और पूरे विश्व भर में आने लगा है। सो बिसाइड्स पिछले 30-40 साल से जो सेक्सुअल लिबरेशन हो रही है मोस्टली अच्छी दिशा में, डिजायर डायरेक्शन में, वो शायद नया मोड ले सकती है भारतवर्ष में और दक्षिण एशिया में। अगर गौर करें इंडिया टुडे का लास्ट से पहले का जो इश्यू है उसमें इंडिया टुडे की कवर स्टोरी यही थी, यो यो यू लिव ओनली वंस, नॉट यो यो योलो, सॉरी। ओके, तो मतलब जो बेफिक्री मानव समाज में, मानस पटल में दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद थी, वो अभी भी होने लगी है और शायद होने की संभावना है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा हमारे आज के विषय के संदर्भ में कि अच्छे या बुरे रिजल्ट के साथ मिक्स्ड रिजल्ट में शायद ये जो होगा दक्षिण एशिया में, भारतवर्ष में खासकर, और ये ना भूले, ये मुझे शायद याद दिलाने की भी जरूरत ना हो कि भारतवर्ष में 300, 400, 500 साल के कोलोनाइजेशन में, मुगल और ब्रिटिश एरा में सेक्सुअल इश्यूज और दब के रह गए। वो संदूक में जो रखा जाता है, वो संदूक में भी उसको सबसे नीचे की तह पे रखा जाने लगा। सो द colonial mindset and the colonial impact on India and South Asia was so severe about this issue. जाहिर है हम सब समझ सकते हैं। तो अगर मिक्स तरीके में या मोस्टली पॉजिटिव दिशा में अगर सेक्सुअलिटी लिबरेशन होती है, और ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स रहे हैं विश्व भर में और इंडिया में, वो अगर अब शैकल्स, वो बंदियां छूटती हैं, तो क्या हमें हमारे दिव्यांग जनों को उसमें साथ मुनासिब रूप से, सुचारू रूप से साथ लेके नहीं चलना चाहिए? तो मैं अपने आप से और हम सबसे पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि जो एक नेचुरल चेंज हो रहा था कुछ दशकों से, उसमें मेरी सोच में इस महामारी के आफ्टर इफेक्ट के तहत एक और एडेड इफेक्ट होगा जो मोस्टली अच्छी दिशा में होगा, उम्मीद है। लेकिन क्या हमारा पहला फर्ज हर स्तर पे, जैसे मैंने इनॉग्रेशन में कहा, न सिर्फ कानूनी फ्रेमवर्क में, legal framework, right based framework definitely requires that we should focus on this, but even before that, humanistically, philosophically, ethically, morally, क्या हमारा ये भी दायित्व नहीं बनता है कि हम हमारे दिव्यांग जनों को इस मूवमेंट में साथ लेके चलें और जो टॉपिक है सेल्फ एडवोकेसी में मदद करें। भी थी एक आधे संवाद में कि न सिर्फ बाकी लोग एडवोकेसी करें, लेकिन बहुत सारे और मुद्दों की तरह हम अगर ये कैटलाइज कर सके, अगर हम ये कोशिश करके सफल हो सके कि जो दिव्यांगजन है, आईडीडीज पर्टिकुलरली, वो सेल्फ एडवोकेसी कर सके अपने सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल राइट्स के बारे में। फिर मेरा एक पहला मुद्दा, मैं शायद बताने माफी चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 1.5 घंटे का सेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा 30-45 मिनट बातचीत करके फिर हम लोग वार्तालाप कर सके। आई एम श्योर देयर विल बी टू मेनी क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स फ्रॉम आवर कोलीग्स, और हम सब मिलके अगर कुछ सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे तो कोई बात नहीं, उनको फ्लैग कर देंगे, 3 दिन में ढूंढ लेंगे। 3 दिन में भी नहीं ढूंढ पाए तो शनिवार को फिर फ्लैग कर लेंगे कि शनिवार के बाद ढूंढ लेंगे मिलके आने वाले समय में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ पाए, बड़ा पेचीदा विषय है। So my first question was that. The second is that जैसे जैसे आमतौर पे किया जाता है और मेरी राय में किया जाना चाहिए, दो ओवरलैपिंग इश्यूज जो हैं, should we not do well or would it not be better if we consider them together? Sexual and reproductive health rights, not just sexual rights, like sexual health, but also sexual and reproductive health rights. तो ये मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा जवाब ये है कि मेरा जवाब सेकंड सवाल में भी जवाब में है यस, निसंदेह हमें इन दोनों की एक साथ बात करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि मानव इतिहास में, जैसे मैंने कहा, साइंटिफिक स्टडीज में, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में और मीडिया में भी इन चीजों को बारहा पहचाना गया है, इनको फ्लैग किया गया है, लेकिन
ठोस ठोस और सुचारू सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अभी भी कम हुए हैं। आप में से शायद किसी को ध्यान हो, कोई पब्लिक हेल्थ या एथिक्स में इंटरेस्टेड रहा हो। मेरी पब्लिक हेल्थ के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, उसके आगे पीछे में और समझा, टस्के की स्टडी इज अ लैंडमार्क स्टडी फॉर बायोएथिक्स। और वहां यही हुआ था कि जो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली महिलाएं हैं, उनकी हिस्टेरेक्टोमी कर दी जाए। क्यों? बड़े अच्छे विचार से कि जी अब्यूज भी हो जाए, कंसेंशुअल या नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्शन भी हो जाए, तो कम से कम प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो दी मैनेजमेंट ऑफ, पुणे में हुआ था कुछ सालों पहले, 90 के दशक में, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक दो बार ये मामले जा चुके हैं। सो वेरी ऑफन अनफॉर्चुनेटली एज अ वेरी बेनेवोलेंट पैटर्नलिस्टिक caring attitude, concerned groups and agencies and management seems to decide on very drastic measures जो एटलीस्ट मॉडरेट या मॉडरेट से सीवियर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले महिलाएं हैं, वो जैसे ही उनकी मेनार्क हो जाए, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाए, हिस्टेरेक्टोमी कर दो जी, सो दैट एटलीस्ट यू विल अवॉइड प्रेगनेंसी। करंट थिंकिंग 21st सेंचुरी में है कि वो बहुत ही एग्जैजरेटेड स्टेप है। और वहां फिर बात आ गई सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स की। कुछ याद होगा आप लोगों को, और फिल्मों में भी आ चुका है। ये जो बीच में बात हुई थी, जो आलोक ने बहुत अच्छे से अपने व्यक्तित्व में बहुत सारे मुद्दे बताए, उसमें से एक था अपना सेक्सुअल पार्टनर, अपना लिविंग पार्टनर, अपना कंपेनियन, नॉन सेक्सुअल या जो कुछ भी उसका शेड, क्या ढूंढने का मौका नहीं होना चाहिए? क्या हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए? आप याद करें श्रीदेवी और कमला हसन की वो फिल्म सदमा, आप याद करें बच्चन की सूर्यवंशम, where the junior Bachchan's second role was essentially, by all accounts, with borderline or mild intellectual impairment, right? तो हर पहलू में ये मुद्दे आते रहे, विज्ञान में, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ में, सिनेमा में, पॉपुलर आर्ट्स में, लेकिन सस्टेनेबल सॉल्यूशन बना नहीं है। ये मेरा तीसरा मुद्दा है, उम्मीद है कि बनेगा। चौथा मुद्दा ये कि उम्मीद इसलिए बनी कि जो जो एक इतना बढ़िया यूनिवर्सल अम्ब्रेला, बहुत बड़ा छाता समान, जो यूएन कन्वेंशन बना 2006 का, यूएन सीआरपीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसमें काफी अच्छे मुद्दे इंक्लूड किए गए हैं। मैं एक एक या दो याद करूंगा धाराओं के साथ। सी आर्टिकल 25A जो है यूएन सीआरपीडी का, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट हेल्थ राइट। ऑफकोर्स अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स कहीं पे नहीं है आर्टिकल के टाइटल में, यूएनसीआरपीडी में भी। लेकिन थोड़ी बारीकी से देखें तो हेल्थ राइट्स के तहत उनको इंक्लूड किया गया है। ये अलग विवाद है और बन सकता है, चर्चाएं भी हो सकती हैं। ओके, one of the colleagues is saying could you use more English if that's all right, सबके साथ प्लीज। थैंक यू अल्लाह, मिरांडा or whoever. So the fact that UNCRPD does not have a specific separate article on sexual and reproductive health can be a debate or an issue to be raised now or later. But if you look at it a little bit minutely, the section 25 on health rights does talk about in 25A inclusive of all health rights, and I'm quoting here, including in the area of sexual and reproductive health, unquote. तो यूएनसीआरपीडी के धारा 25A में, आर्टिकल 25A of the UNCRPD 2006 absolutely clearly requires that all agencies of the state and the society will make sure that health rights. Okay, will you give me half a minute? I'm going to run into a problem. My laptop fading out, and so I better correct that. Bear with me for half a minute. And my source for net also comes from the same power source. Okay, give me a minute.
I'm back, and my apologies. I think I'm well set for my power contribution and the net connection and the laptop. Okay. So, like I was saying, UNCRPD makes it very clear. In fact, UNCRPD under 25A makes it more clear for all health rights, including sexual and reproductive health rights. It should be, of course, included. It should be accessible. It should be like all other health rights, no less, no more. There should be, of course, no discrimination in law or policy, and there should be no denial of services. Like all health rights, sexual and reproductive health rights also cannot be explained or subsumed by any denial कि non availability है, नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, helpless हैं. So my interpretation earlier also when I have looked at this, and this morning on the train when I looked at it again, section Article 25A of UNCRPD is very assertively clear about sexual and reproductive health rights, although it doesn't specify. My interpretation in its fullest range. I'm sorry, friends, since I'm traveling, there is this bit of issue, I think. Yes, sir. We are set till I have trouble again. So we are set only till the time that we have trouble again. Sorry about that. Okay, so जैसे मैं कह रहा था, Article 25A of UNCRPD is very assertive, and I interpret about all sexual health rights. Now, as against that, unfortunately, and I have been a little surprised in the past. आज सुबह में और surprise हुआ, आलोक ने बात किया, National Trust में भी सिर्फ एक passing, National Trust Act में एक passing mention है. The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 also seems to pay, I would say, very minimal lip service to the topic that we are concerned with these days: sexual and reproductive health rights. In as much as that Article 10 talks about, here there is a separate article for reproductive rights, unlike UNCRPD. Although Mental Health Care Act as well as RPWD seems to have been driven by, not just in spirit, but in large part of the letter by UNCRPD, strangely, it seems to have a separate article with the title Article 10 of Reproductive Rights. But there are only two provisions there under Article 10. And one is that the person will have right to information about reproductive health and, of course, about family planning. Okay. So Article 10A of the RPWD talks about the right of persons with all disabilities. 10.1 about reproduction. Jisko colloquial bhasha mein we keep saying as sex education, whatever good or bad that means. And of course, family planning. 2, that there should be no medical procedure carried out on any person with disability without consent. Now, that's a specific provision under 10.1, Article 10.1 of RPW. Now, like I mentioned earlier briefly, you will appreciate world over in India, since there has been that history of hysterectomy or
felt it necessary to highlight this part. But I am troubled about the fact that legal framework, while internationally is very strong, in this country is rather weak for the topic that we are discussing today. And that's one reality about advocacy. More importantly, the Indian framework seemed to only talk about reproductive health or reproductive rights, not about sexual rights. I think, again, reflecting the social reality and the political mindset, not surprisingly. You know, RPWD drafting committees and all the revision committees must have, I don't know whether they consider, I wasn't party to that, so I don't know whether they considered it, dropped it or whatever. But there's a big gap there, you know. So that's the legal framework. जैसे मैंने कहा, मुझे अभी भी ये लगता है कि we should be actually talking about the social and the ethical framework also alongside the legal framework. Allow me for a minute or 2-3 minutes to see some of what has been discussed, mentioned since the morning. What are the factors contributing to this lack of emphasis, lack of framework, forget much worse, ground reality? One major, it seems to me, like Alok said so beautifully, so eloquent in his own way, is what I've always seen, and we agree so much about this, actually. I'm sure all of us do. Persons with disability suffering from non-personification. जो UNCRPD ने इतना assertively highlight किया है ना, that each person with any disability is also first and foremost and in totality a person. The rights accrue to a person. So the personhood not being recognized passively or being actively denied, non-personification of any person with disadvantage, certainly person with any disability. Second, of course, as again was mentioned, stigma, judgmentality. So if I might say, unfortunately, a lot of these 3 or 4 important factors that I am going to highlight are also sadly in many health professionals, including mental health professionals, and we have professionals and people working with IPD or Divyangjan. So हमें ये सच्चाई भी we should accept, including stigma, judgmentality. Third, non-accept reality of the sexual and reproductive facets of a person with disability. As a part of the non-personification, मतलब बना तो mostly किसी caretaker के या professional के या policy maker के radar में आता है कि भाई ये पहलू भी होता है, that this aspect also is a reality. I mean, this again part of the persona issue. And of course, ever so often, like 1 or 2 of our colleagues raised the question, and I'm really grateful they did, is either there is lack of initiative or lack of willingness or inaction, but often there is also helplessness. Even if a team or an individual working with Divyangjan or IDD specifically are sensitized to this or are beginning to realize this, there is a sense of helplessness because of lack of knowledge of what to do, lack of acceptance around, and all of that. I do want to briefly mention here, जो मैंने शायद मशवरा में 1-2 बार पहले बात किया हुआ है, जो इवास अस्पताल है, बेसिकली निमेश बेंगलोर या CIP रांची और बहुत सारे अस्पतालों की तरह, जो पुराना शादरा का मेंटल हॉस्पिटल था, that became इवास in 1993, and I spent about 23 years from 98 to 2001. हमने हॉस्पिटल पूरा रिफॉर्म कर दिया. It's become one of the best government sector or private sector mental health institutions. We set up a halfway home that Alok and some of you have seen called Saksham on the campus. Or mostly we have no long stay patients now. They're all back to the family or in social care homes. 40 odd persons, men and women, that we have had in our rehab ward before 2007, पहले 20-25 साल, और 2007 के बाद आखिरी 17 के बाद, sorry, आखिरी 4-5 साल मेरे tenure पे, they were set up in a very nice home. One issue that I did not succeed, or I might even say I failed, वही helplessness वाला जो issue है, is that I really was and would still remain keen in Saksham or any other residential facility to provide graded approach for sexual and reproductive rights. And I could not do that.
I could not do that because my medical, psychiatry, nursing colleagues and the other people, I could not carry with me. I mean, they found the idea very ridiculous and so even being the director, I kind of held it back because there's no point implementing a system that majority of my teams didn't see or agree with. मजाक में कहूं एक एंड से शुरू करूं. I will talk about the whole spectrum of rights now at the next point. But मेरा विचार ये था कि अगर कोई man या women in that group of 40 odd persons, if they required professional sexual service, why should I not be willing or able to provide that? Don't take me lightly. I mean this seriously. Like Munna Bhai does in that movie for Jimmy Shergill, I don't see why not. I mean, that's one end of the spectrum, providing a professional paid sex worker for somebody who might require or may be willing or agreeable. But the other end of the spectrum, and that will begin to answer the question that I think Pooja had raised, and Aruna also raised. Pooja ji, I hope you are with us. See, the first step, one end of the spectrum is our willingness and sensitivity and respect to sensitize our persons with IDD, whichever setting, home, residential care facility, wherever, with masturbation. This is so difficult, let's face it, even in this group. You know, how many of us would be willing to talk about masturbatory practices? Allow me to say here, Kinsey, medicine के US में, and there's a famous Kinsey report in 1966 or 67 about sexual practices of the US just during that swinging 60s post-World War that I was talking about. And you know what Kinsey said in his report, in their report in 66 or 67? And there again, they didn't talk about women, they only spoke about men. That also shows a blind spot or stigma. But they said, and I quote, 95% of men accept that they masturbate and the other 5% are lying. So masturbatory practices is a harsh, unpleasant, hidden reality. Let's forget for a minute society का क्या कर रहे हैं, आपके हमारे जैसे families का क्या करें. Although that affects what we do and how we do these practices with our IDD clients. It can't be devoid, right? But first end of the spectrum, I mean, I hope you understand what I'm talking about. The other end of the spectrum is I would provide a professional commercial sex worker to my adult IDD, man or woman, not again one gender. See, if there's a lady, there are enough male prostitutes and gigolos in any city. Why should I not be willing to provide that with all proper ethical legal framework, right? So that's one end of the spectrum. First, the other end, first step is masturbatory practices. Let me mention one more very, very relevant thing, and this I learned during the HIV epidemic in late 80s and early 90s. For all of us, at least India and South Asia, I know, although I happen to know a large part of the world in these spheres. See, talking about masturbation, talking about penovaginal sex, talking about sexual intercourse, penetrative sex, is still comfortable for at least some of us as long as we are doing it in English. हम में से कोई भी माई का लाल माफ करिएगा. Let any Tom, Dick or Harry or Jane come up and actually talk about in this group here about masturbatory practices or sexual education in the vernacular. See, unfortunately, a lot of those terms used have become part of the abusive lingo. The trouble lies there, right? जो शब्द प्रयोग, the use of words which need not have been so, right? Which should have been neutral and devoid of emotional or attitudinal baggage, unfortunately has become so. So it's understandable that health workers, rehab workers, anybody working in any helping profession, and you know, I'm not going to this more, but really HIV pandemic, for those of us who are willing to learn individually, in groups, as institutions, as this kind of became better, and yet it's not nowhere near where it should be. If nothing else, I suggest and request
please examine to yourselves individually or talk in your small group of 2, 3, 5 workers who you work together, you're comfortable with each other, and say, okay, tomorrow morning or next week, let's go and conduct a session with our ITD clients about these aspects. And let's do it in vernacular. No English word permitted. And you will see your own discomfort. I do still. Like I'm challenging all of you, beyond 65, running nearly 67 with 40 years in the profession, having worked through HIV epidemic, having worked through a whole lot of other such issues, I'm not at all claiming that I'm entirely comfortable or that I would be. Especially if I happen to have a mixed gender group as clientele or in my team. You see, it's also easier if you happen to be all 5 males. 2 educators and 2 professionals, 3 clients हैं, 5 मर्द बात कर रहे हैं, 5 महिलाएं बात कर रही हैं. Our discomfort obviously, understandably, only becomes much worse when you have a mixed group. So those are the things that we really have to examine. I will not focus on that too much now. I'm about to finish. So lastly, there are 2 points that I want to say, and I hope Alok and Diki will agree. LGBTQ का आलोक ने बहुत अच्छा mention किया. That was on my list already, so I'll save time on that. That's another huge area. Sexual reproductive health rights for LGBTQ with disability. But if I might say, self-advocacy जब हम कहते हैं, maybe we also need to keep in mind the UNCRPD concepts of supported decision-making की तरह supported advocacy, substituted advocacy. So for me, when we say self-advocacy, it may not necessarily mean purely only technically self-advocacy. For me, the framework would include supported or substituted advocacy also for IDDs or other disabilities alongside the official guardians. Here there is a problem, Alok. A problem is that the RPWD, again, in good faith, not wanting that guardians should take over full control of persons with disabilities' lives, they talk about only limited guardianship. The moment and the definition of limited guardianship is for specific areas. Assets or property managed on financial aspects, or one aspect that the court has agreed this person cannot look after. So a guardian here cannot perhaps be part of the advocacy, unfortunately, in strict RPWD terms. So that also requires some more work. And so, to go back to where I started, my hierarchy would be, 1, like I said earlier, eliminate or drastically reduce violation of sexual nature, both genders. Let's not make the mistake of believing that it only happens with girls or young girls or women. It happens with IDD persons across genders, not just 2, all 3 genders perhaps. 2, that we have not spoken, I think, since the morning, menstrual health rights. 3, at least passive assertion of an openness and sensitivity to sexual and reproductive health rights. Here, RPWD and National Trust Act are very weak. And so what we perhaps also require is a lot of legal advocacy for amendments and improvements in the legal framework. And lastly, active advocacy and action for sexual and reproductive health rights, like the example that I gave you. I mean, it might be very tickling, it might be very amusing, it can be very different things for very different people. But believe you me when I say that before I left IBAS, I wish I had that part. Because there are men and women in that home, Saksham, who have been in the hospital, some of them for 25 or 30 or 40 years. We inherited them from the old mental hospital of Shadra. There were some girls there who came in when they were 5 or 10 or 12 or 15. So, entire spectrum from menarche, how does a mother or any guardian acquaint them with menarche, go through the menstrual process, menopause, we haven't mentioned, IDDs who reach menopause, and of course, assertive assurance of reproductive and sexual health rights, including, as I think Alok was hinting, just companionship. Forget either sexual conjugal rights or forget reproductive rights for a minute. Companionship rights.
same gender, across genders, whatever. I will stop there. I think we are nearing 12:45. So technically we are halfway through that 1.5 hour session. And so we still hopefully have the second half for a whole lot of actively solicited comments, suggestions, criticisms, disagreements, and more. And of course, questions if there are. We'll try and find answers, but we may not. Thank you so much. डॉक्टर साहब, अभी आपने पिछले दिनों एक न्यूज पढ़ी होगी, अखबार में आई थी कि एक लड़की ने अपने आप से शादी करी, कि that girl never wanted to marry a male, और ना ही किसी लड़की से शादी करना चाहती थी, स्वयं से शादी कर ली। Your video. Alok, your thoughts or any questions? क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? Yeah, so people can, all the delegates, I request you can unmute yourself and even you can raise your hand and ask the question. And sir, my two suggestions, not suggestion, I can't say the suggestion, I can't suggest you. जो आप बोल रहे थे, उसमें मेरे दिमाग में दो चीज आया सर. जो आपने एक प्रोफेशनल सेक्स वर्कर के बारे में बात किया एंड मस्टरबेशन के बारे में बात किया. हम देखें तो ये आईडीडी में ये हमारी भी कहीं ना कहीं दुविधा रही है, एज वी आर आल्सो रनिंग द रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम्स. तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो हर तीसरे दिन या पांचवें दिन या वीक में 2 बार तो इस बात का जरूर चर्चा होता विद द केयर गिवर, एंड इट आल्सो कम टू मी विद दैट ऑल द चैनल्स कि इसने ऐसा कर दिया, इसने आज उसके साथ मस्टरबेशन कर रहा था, आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज वो प्रॉब्लम हो गया. तो मैं यहाँ पर बहुत दिनों से मैं भी आपकी ही तरह थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ. निकलने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, कैसे यहाँ से. No, I'm here to help. I'll come and help you. No problem. Yeah, we'll come and help you. Not a problem. What we have made it so far, we have encouraged the making the choice, giving the so many options. वो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को काफी सपोर्ट मिला है कि अगर हम lot many options in the sexuality, the sexual activities में भी हम options ढूंढने की कोशिश करें तो वहां पर भी हम वो करें. और ये एक टैबो, और अगर मैं देखूं कि एक अवेयरनेस among the caregiver, among the person those who are looking for, वहां पर थोड़ा सा वो लैक है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, और वी कैन से कि उसका जो एक अपब्रिंगिंग है या उसका जो सेल्फ थिंकिंग है टुवर्ड्स दीस टॉपिक्स, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है. और जो आप वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बात की सर, वो तो ऐसा है कि दुखती रख पे हाथ बता रहा हूँ, हमें से कोई भी वो करके दिखा दे. मैं जो क्लेम कर रहा हूँ ना कि मैं आके आपके साथ काम करूंगा, आपके बच्चों के साथ, यू विल सी आई स्टिल हैव डिस्कम्फर्ट. मतलब हिंदी में या गुजराती में या पंजाबी में वो बात करना, और अब लेट मी आल्सो से दिस, हॉस्पिटल में हमारे पास कुछ मरीज रहे थे पिछले 10-15 साल में जिनको बायोलॉजिकल रीजन से बीमारी के कारण ऐसी हाइपरसेक्सुअलिटी थी that I sat with them with my colleagues, and we actually, so I've had some experience in educating people about masturbatory practice, you know, and yet it's very difficult for us. This topic I was talking very early when we got up, and I was talking to Indira. लोग मिलते कहाँ हैं जो सही लैंग्वेज में अगर ट्रेनिंग देने की बात आ जाए तो एक सही प्रॉपर लैंग्वेज अगर हम अपने बच्चों के लिए यूज करें तो वो कहाँ मिलते हैं. तो ये तो सेल्फ एग्जामिनेशन करने की बात है. एक और विचार आ रहा है बिफोर आई फॉरगेट इट, सॉरी. अब पता है क्या, व्हाट आई डिडंट मेंशन, आई जस्ट वांट टू फ्लैग इट इन दिस सेशन और इन दी 3 days, प्लीज बात करिएगा. सी लाइक आई मेंशन अबाउट companionship rights or companionship opportunities, even in terms of intimacy or sexual rights, it need not always be penetrative sex. It might well be non-penetrative, in fact, non-sexual physical intimacy. You know, so again, my favorite spectrum या range की बात करें, from one end of the spectrum of only companionship to other end of the spectrum
हेट्रोसेक्सुअल पिनोवैजाइनल पेनिट्रेटिव सेक्स, बीच में बहुत सारी चीजें हैं, यू नो. सॉरी गुप्ता साहब प्लीज. डॉक्टर मैं एक मुद्दा बहुत जबरदस्त रह गया बीच में, कि जो ये नाइट डिस्चार्ज होता है, रात्रि सुखनल जिसको हम कहते हैं वो हिंदी यस में, मेरा चल रहा है, तो बात नहीं कर. वो चीज बहुत रह गई, वो एक रह गई है कि a lot of people are not aware. Yeah, when they sure. get We'll up do morning. that. Dr. Ujjwala is sure, sir. Yes. We'll bring it up. Thanks. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ सर, मैं मिमेरा हॉस्पिटल It'll be में nice जॉब करती हूँ. if you all. मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो आपने बताया आर्टिकल 10 है, एकदम मैं उससे सहमत हूँ. मैंने एक प्रयोग किया था. मेरे यहाँ एक अच्छे परिवार का लड़का था जो डफ एंड डम था. और हाँ, और वो काफी दिनों से मेरे पास आते थे काउंसलिंग के लिए. और अब उनको ये था कि मेरा एक ही लड़का है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हमको शादी करनी है. और तो मैं जो काम करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स आते हैं. तो मैंने एक बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लड़की के बारे में उनके साथ बात की और उनको बताया कि आप क्या ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो क्या. तो फिर मैंने उन दोनों के परिवार के पेरेंट्स को मिलाया एक साथ दोनों को. और ये मेरी कोशिश थी सर, एक 6-7 साल पहले की बात है, और ये कोशिश सक्सेस हुई और वो दोनों परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया. आज वो परिवार वो लड़की को भी संभाल रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बराबर वो बाकी सब व्यवहार नहीं कर सकेंगे, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव होने के कारण वो बहुत हैप्पीली रहते हैं. और उनके बाद उनको एक लड़का भी, बच्चा भी हुआ और वो नॉर्मल हुआ. तो इस तरह से हम हमारे ये शाला के जरिए ऐसा ब्यूरो भी कर सकते हैं कि ऐसे परिवार के जोड़ के, जैसे शादी.com है, क्यों उनको ये अधिकार है ये सब करने का. क्यों ये बच्चों को सेरिब्रल पाल्सी के हैं, एपिलेप्सी के हैं, फिर ऑटिस्टिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं पेरेंट्स सर, वो अपने बच्चे के साथ दूसरी को भी संभालने के लिए रेडी हो सकते हैं. तो क्या हम इसके द्वारा ये कोशिश कर सकते हैं? और मेरे को लगता है करनी चाहिए. एक मेरा सुझाव है सर. थैंक यू सर. बहुत अच्छा आइडिया है उज्ज्वला जी, और आपका केस स्टडी बहुत अच्छा है. सिर्फ एक नॉट टू एट ऑल डिसएग्री विद यू, और हम सब आई थिंक आपकी नैरेटिव समझ रहे हैं. एक फिक्र सिर्फ इतनी है कि हमारे समाज में, अगेन किसी भी समाज में, खासकर हमारे समाज को हम जानते बेहतर है और इससे हमें हमारी समाज की बदिया भी दिखती है. हमारे समाज में शायद ये होता है कि बिना बताए, बिना जिम्मेवारी के, बातचीत किए एक दया के रूप में बांध दिया जाता है बेटे को या बेटी को. अच्छा भाई इसको ये है ना, वो नहीं होना चाहिए. जो आपने डिस्क्राइब किया वो बहुत अच्छा है ना. हाँ, क्योंकि दोनों परिवार रेडी हो गए तो ही. अदरवाइज ऐसे भी केसेस होते हैं कि कर लेते हैं, बाद में वो कंप्लेंट करते हैं कि हाँ. तो वो दोनों डॉक्टर उज्ज्वला, मैं एक याद दिला दूं. I don't know, sorry. You know, Gulzar is a songwriter, but in my view, he's an equally good, if not a better director. If I'm not mistaken, he had directed among a few very good films in the 70s. One called Koshish. Sanjeev Kumar and Jaya Bhaduri, both with hearing and speech impairment. Okay, arranged marriage, of course, and such a sensitively made movie. I can't tell you. You know, कोशिश अगर किसी को इंटरेस्ट हो, प्लीज देख ले. 70s की. It's a masterful movie. You know, जैसे स्पर्श थी. You remember स्पर्श about visual impairment, नसीरुद्दीन है. सेकंड मुझे विचार आता है, मुझे सुबह से विचार आ रहा है. लेट 80s में मैंने एक अमेरिकन आर्टिकल पढ़ा था, psychiatric patients who marry each other. Okay. Somebody had done this fascinating study कि अगर भाई उस वक्त ये था ना, अब तो सच्चाई बदल गई है. उस वक्त ये था कि मेजॉरिटी साइकियाट्रिक पेशेंट्स लंबे अरसे तक डिसेबल्ड रहते ही हैं, कुछ डेफिसिट रहती हैं ये वो. तो विद दैट, एंड दे फाउंड दैट साइकियाट्रिक पेशेंट्स, इनवर्टेड कॉमास,
who married each other actually had a better quality of marital life and life satisfaction as compared to general population. So I don't know disability में या ITD में अगर कोई ऐसी कोशिश कभी हुई है at database, but I can never forget that one study among the few early age में जो पढ़ी थी ना, you know, there are a lot of hands up. हरप्रीत मल्होत्रा है and हाँ जी sir, please. डॉक्टर उज्ज्वला ने जो कहा ना कि भाई पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए, मैंने कहा पेरेंट्स की कंसेंट तो जरूरी है, मगर बच्चों की कंसेंट होना भी बहुत जरूरी है. Yeah. The kids should also have the consent, or I will marry him. Or at least assisted decision making. Correct. Assisted decision होना चाहिए. So before getting the two married, either they should have their own consent, or we should let them know the pros and cons. Right. कि सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ मिला करके उनको जो आपने कहा सपोर्टेड फैसला लेने में उनको मदद कर सकते. हरप्रीत जी है, नेहल है, and then there was Malik Saab also. So whoever would like. पायल जी है now. Okay. Yeah. Hello. Please, anyone. Yeah, please. ये बहुत अच्छा suggestion दिया कि इस तरह से अगर disability में disabled लोगों को मिलाकर हम इस तरह का देखें, we can create matrimonial prospects for such people. It's a very good prospect. I think इस पे थोड़ा ज़्यादा गौर करना चाहिए और हमें एक तरह का डायरेक्टरी बनानी चाहिए जहाँ के हमें पता हो कि कौन से स्पेशलिस्ट किन तरह के लोगों से डील कर रहे हैं, and we can connect with those people and make the families meet. This is a very good thing so that such people have a better prospect of living a better life. Marginalized जो जैसे ये होते जा रहे हैं, they don't marry, they don't have anything to look forward to. Looking for a partner is a very important aspect of a psychological well-being also for them. Sure. So ये डायरेक्टरी अगर ऐसी बन जाए जहाँ पे हमें पता हो कि कौन लोग किस तरह के disabilities के साथ डील कर रहे हैं, and we can contact them, that would be a very wonderful thing. I can tell you that our Vice President, Dr. Kamal Kumar, before pre-COVID, he had initiated this platform. But let me check that whether during the COVID some work has happened or not. नहीं वो करेंगे और एक आलोक और हरप्रीत जी हमें एक दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगी briefly. One is of course the legal capacity assessment properly done. जैसे गुप्ता साहब ने कहा ना, concerned individuals. So legal capacity of concerned individuals, appropriate guardianship or other family matters be sorted out. But yes, I think that can be a great idea. Let's see Nehal and then Payal Banerjee ma'am. Yes, sir. So I'd like to tell you that in Nagpur, there was an initiative that was similar to what we are talking about. So there was actually a marriage bureau created for individuals who do not mind marrying someone who has psychological or neurological disabilities. It's called manomarriage.com, and I think it was started by Dr. Avinash Joshi in Nagpur. So we do have these. Oh, really? Wow. Yes, these. I could put the link up in the chat box, perhaps, if the members. Yeah. And I know Avinash. I believe him too. Well, that's very good. Yeah, please share with us. Yes, sir. So I just wanted to share that with the members here. Great, wonderful. Yeah, Payal. Yeah. Yeah, hi everybody. This is such an interesting topic, and one that touches all of us actually. It has a special meaning. I think I'm turning the spotlight onto the professionals working with people with disabilities, being from the profession. And I feel, there is a lot of, what can I say, self-growth or insight into yourself, which is required to be able to do this work, from day to day. I feel your work has to be a lifelong process of personal change and of reflection and of learning. If we don't think about our work and we don't change ourselves and we don't learn, and we don't think about what personal boundaries that we have, are those boundaries very narrow-minded? Do we have broad-minded boundaries? How much is it that we can accept? Can we accept a person who is doing self-stimulatory behavior in front of us? Will we be uncomfortable to see that?
what would be our reaction? What would be our response? I had this opportunity to change my, or to broaden my horizons as far as my, personal boundaries were concerned. It is really something very personal I would like to share with you. But as far as I was teaching and I was a special educator, I was able to avoid, theek hai, you felt a little bit of displeasure. Okay, you were not judgmental because you had so much of learning behind the disability that you knew that it was instinctive for that child to do what he was doing or she was doing. So you weren't judgmental. But at the same point of time, you weren't addressing that issue within yourself. You see, we always want to change the next person, but we don't want to change ourselves. And that's the point that I'm coming to, because when I was a therapist, when I did clinical music therapy and I had to work in a very intimate space with the client, whoever the client was. And if that client did a behavior that was socially unacceptable, it challenged my personal boundaries, okay? And, we, as music therapists, like we have to record our sessions and take supervision from our counselor upon how we reacted or responded or whether we could have done a better job, right? So हमारी reactions क्या थे? उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए जो हमें थेरेपी में मदद मिले इस बच्चे के साथ. So, then I realized, when I put the insight onto myself, I realized that I was very uncomfortable with certain kind of sexual behaviors which were displayed by the client. So, this kind of thing, because we do just a few techniques I will just work on, is we do holding or containing. That means supporting somebody without judgment is called holding a person, right? That means आप उस जान को आप support कर रहे हो, आप hold कर रहे हो. So it is something almost divine that you are doing for your job. It's like, when I went to Thailand to get a massage, this girl began the massage procedure by washing my feet. She washed my feet and she dried my feet. And then I was not comfortable with somebody touching me, let alone touching my body for massage even, right? So that was my narrow personal boundary, because the first time I was going for that. But when this young girl came and cleaned my feet, and then she told me, ma'am, you lie down, you cover yourself with this towel, I realized that how much of dignity and respect she was granting to me as her client. You understand? So this is the kind of dignity and respect that is required in our professions, that we must, keep up that level of respect for the child or the individual. I have heard you on one or two earlier occasions too, and I think we are very lucky to have you with us. Can I quickly say one or two things before I forget? Yes, sure. One, जैसे आपने कहा, पहला वाक्य जो आपका था कि हम सबको अभी सीखना बहुत बाकी है, प्रोफेशनल लर्निंग बहुत बाकी है. आई एम ग्लैड यू सेड समथिंग दैट आई डिडंट से इन सो मेनी वर्ड्स. यहाँ जो लोग हैं वो और बाकी सब प्रोफेशनल को भी सीखना बहुत बाकी है. सेकंड occurs to me is that what you were talking about essentially I have always seen it as comfort. और जो आपने कहा कि that lady in Bangkok, Thailand made your discomfort into very comfortable situation, तो और मुझे याद आता है वो पिक्चर, you remember Gandhi ji washing the feet of that person with leprosy. Yes. The famous picture है ना. तो वो आपने जो बातें कही बहुत सही है. Really, I think we should have you a lot more formally also. आप हमें participation join करती है, बहुत अच्छी बात है. I saw one or two other hands. Sorry, just one, because Namrata and I share a bond from the past. Okay. And we have been training teacher trainees together. And when I used to take, the practical classes at Achal, Namrata ma'am was also there for certain occasions. And
you know, the first thing we used to tell the trainees when we went into the senior classes is that beta, don't be shocked. आपको क्लास के बाद में आप बच्चे के साथ बैठोगे तो फर्स्ट थिंग द चाइल्ड विल टेल यू इज मैम मेरे से शादी दी, मेरे से शादी करोगे? You know, this is the need of those children. I said, beta, shock nahi hona, and don't touch the child inappropriately. What you think is, you know, you don't need to hug them, or, you know, keep your dignity and respect as far as they are concerned, but give them that encouragement and don't judge them. I said, ये normal है, दीदी शादी करोगे मेरे साथ? I said, बुरा मत मानना, you know, this is their way of appreciating you, that they like you, they consider you to be a young and active This is where Freud messed up the psyche of all psychologists and psychiatrists. I am glad you are saying to your training what you did. Freud, with all respect, messed up the entire psyche of psychologists and psychiatrists by that distancing bit, you know. I agree with you completely. There are three other hands, I think. Sorry. We have Farheen that she has raised. Farheen ji hai. Yeah, please. Hello, sir. Myself, Dr. Farheen Kamal, rehabilitation psychologist, working in the same profession from the last 10 years. तो मेरे पास कई बार इस तरीके के बच्चे आए, हम लोगों ने उनको ट्रीट किया. अभी लेटेस्ट ही मेरे पास एक बच्चा आया था जो कि बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का था, लेकिन उसको वो क्योंकि वो बड़ा हो रहा था, उसकी सेक्सुअल डिजायर वालों की लगातार ये कंप्लेंट्स थी कि हमारे कपड़े गायब हो जाते हैं, वो अपने कमरे में किसी को नहीं आने देता, वो मेड्स वगैरह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, अगर वो सामने आ जाएं तो उनको मारने लग जाता है. तो हमने बहुत ट्राई करा समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो बाकी सब चीजों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, जो भी उसको कहा जाए वो बहुत अच्छे से समझता था, वो खुद भी अपनी सारी बातें बहुत अच्छे से हमें कन्वे किया करता था. तो हमारी ये समझ में नहीं आता था वो इस तरीके से क्यों कर रहा है, और पेरेंट्स को बहुत परेशान, बहनों के कपड़े गायब कर देता था, पेरेंट मम्मी के कपड़े गायब कर देता था. फिर एक बार हमने उनके पेरेंट्स को ये डायरेक्ट किया कि आप चुपके से देखिए कि आखिर होता क्या है, करता क्या है. उनकी मदर को हमने प्रमोट किया, मोटिवेट किया. तो वो कहीं ना कहीं उसकी सेक्सुअल डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ रही थी और वो कन्वे नहीं कर पा रहा था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसको इस टाइम कैसे डील करना है. तो वो उनके कपड़े वगैरह लेके जाके, तो शायद वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता होगा उस वक्त अकेले जाकर. लेकिन मैंने कई बार देखा, स्पेशली इस केस में देखा, पेरेंट्स घबरा रहे थे, वो नहीं डील करना चाहते थे इस पॉइंट को. उनको समझाया जा रहा था देखिए आप ही को हैंडल करना है, आप थोड़ा सा इस तरीके से, we were telling all the possible ways to handle him, but mother was not at all able to handle that. She don't want to handle that. बस वो ऐसा कुछ चाहती थी कि कुछ इस तरीके के उनको कुछ थेरेपी दे दी जाए कि वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाए, उनको इस मैटर में कुछ नहीं करना पड़े. एक बात कहूं जी सर. आपने अच्छा वाक्य सुनाया. मुझे माफ कीजिएगा, सरप्राइज नहीं है कि मदर उस चीज को हैंडल नहीं करना चाह रही थी. एक ग्रोइंग अप यंग मैन, यू नो, थोड़ा सा शायद बेहतर हो आप भी गौर करें कि उनकी मदर या आप डील करें, उसके बजाय इफ देयर इज अ मेल प्रोफेशनल हु कैन डील विद इट, यू नो, डायरेक्टली विद द पर्सन, है ना. आप गौर करें तो सहमत होंगी, इत्तेफाक करेंगी. एक्चुअली है ना, एक मुद्दा तो जेंडर वाला हो गया. सेकंड, हम ये भी गौर करें कि देखिए फॉर इमीडिएट फैमिली मेंबर, सिस्टर या पेरेंट्स, ऑब्वियसली और नाजुक हो जाती है बात. वहीं तो प्रोफेशनल सर उनके फादर तो काम कीजिए. हाँ नहीं, फादर ना हो सर, उनके फादर तो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, फरीद तो सॉरी, कोई और ऑप्शन नहीं था. A professional who can be objective and detached rather than immediate family member, ना. तो मेरी सोच ये रही कि मतलब दोनों कारण हो जाएंगे, जेंडर मैच हो जाए और प्रोफेशनल अप्रोच हो, डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव rather than, you know. बट सबसे बड़ी बात इसमें जो हम चूक गए, जो पहले शुरू में दो साथियों ने बात उठाई थी, आपने वही करी. लोग विल टेक 2 minutes हियर.
One, if there is a sexual assault, again, penetrative, non-penetrative, less important, assault by a person with disability, especially IDD. लीगल एस्पेक्ट जो हमारे गुजरात के भाई साहब ने एक सवाल उठाया था, आई गेस बहुत नाजुक मुद्दा है। जैसे हमने उस वक्त कहा, कानून भी ये अभी पूरी तरह तय नहीं कर पाया, ना पार्लियामेंट ना एपेक्स कोर्ट, कि भाई आईडीडी या इम्पेयर्ड इंटेलिजेंस हो या और कोई डिसऑर्डर हो और एज बिटवीन 15 to 18 हो, तो लीगल जिम्मेवारी कितनी मानी जाएगी। आई गेस एज ऑफ नाउ माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज that it will be decided on case to case basis. अभी कोई यूनिफॉर्म लॉ या लीगल प्रोविजन के बारे में नहीं बन पाया है। बट यस, treated, untreated, monitored, unmonitored, both genders, particularly men and women, but unfortunately, and I'm saying this unfortunately, because of the gender stereotypes in the society, growing up adult males or adolescent males with IDD, we all need to monitor much better. जैसे फरीद जी अपना तजुर्बा बता रही हैं, परिवार के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, टीम्स के द्वारा। The solutions may be whatever, masturbatory education हो, अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, अगर थोड़ी सी दवाई की जरूरत है, अगर और कोई 2-4 तरीके हो, so the options can be many. But yes, as far as possible, we would all also have that responsibility, if you all agree, कि हमारी ये जो मुहिम है या कोशिश हो कि जी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स आईडीडी पर्संस को मिले, वो अपनी जगह बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन उसका ये नतीजा कतई नहीं हो सकता कि कोई और व्यक्ति उसका शिकार बने। और प्लीज मेरे साथ 2 मिनट चलें, साइकेट्रिक वार्ड में, हॉस्पिटल में ये हो चुका है, होता रहता है अनफॉर्चुनेटली। मोसी दबा दिया जाता है। आई नेवर बिलीव्ड इन कवरिंग अप, even in my own ward in the hospital, it has occasionally happened, even across same genders. See, one person with psychosis, one under recovery, the other person also possibly has psychotic illness, but also has some personality issues. So again, penetrative and non-penetrative homosexual action ho gaya. Now, of course, the administrative legal issue becomes how consensual was it? See, the claim by the one party there often is कि ये जो कंसेंसुअल था, तो ये बहुत नाजुक मोड है, खासकर जहां भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी हम लोग सुपरवाइज कर रहे हैं। एंड माय रिपीटेड रिक्वेस्ट इज, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ बिलीविंग दैट दिस इज ओनली अक्रॉस जेंडर्स. इट आल्सो हैपेंस, नॉन कंसेंसुअल attempt happens also across the same gender. But I'll stop there. Dr. Simi is there. Dr. Simi Srivastava. Yes, please. Welcome, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you for giving me this opportunity. सर, मैं ये बता रही थी कि every one of us are facing some or the other kind of difficulties when we are talking about sexuality or sexuality training. And secondly, my focus is on not only on the parents, but also we have to train the special educators who are in the special schools. They feel so embarrassed because कई बार बच्चा उसको मालूम नहीं रहता, he becomes totally naked. And the special educators उनको help करने के बजाय, उनको समझाने के बजाय, they also feel embarrassed and they run out of the room trying to call some other persons to take care of the child. So this kind of scenario is being seen in many of the special schools, which I think that DSC के curriculum में we should have one big chapter incorporating all the things which we are talking today regarding how to train a special educator in taking care of a person with intellectual disabilities or whoever it is, so that they should not have that inhibitions in taking care of them in any kind of a situation. This is what this from this platform I request that कि हमको एक curriculum content design करके स्पेशली DSC को देना चाहिए कि एक किस तरीके से we can, because DSC में ये इतना कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है and practical knowledge इन लोगों को zero है. So this is my suggestion, sir. Can I express an opinion, और मेरी ये frustration है among many frustrations in life, that जैसे मैंने रिफर किया, आफ्टर HIV पेंडेमिक हम में से बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि जो बदलाव HIV और हेल्थ के कुछ एरियाज में आया, amongst many other things including this aspect, वो समाज में और क्षेत्रों में भी बदलाव लाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है.
that change of attitude remained restricted only to those programs where HIV prevention was required. तो वो तो हमने कर दिया सफलता से इस देश में, ट्रीटमेंट भी आ गया, ART और एडुकेशन भी हो गया, लेकिन उस HIV पेंडेमिक का जो जनरलाइजेशन इफेक्ट सोसाइटी पे होना चाहिए था अबाउट सेक्सुअल इश्यूज, वो नहीं हो पाया, एंड दैट्स व्हाई व्हाट डॉक्टर सिमी इज सेइंग स्टिल रिमेन्स अ नीड. आलोक, है ना? यस, बहुत जरूरी है, बहुत सही आइडिया. एंड सिमी मैम, अगर हम देखें कि पहले करिकुलम में था, बीच में निकाल दिया गया. ओके. और पहले था बीच में, अब नए करिकुलम को पता नहीं, हमने देखा नहीं है, तो आई थिंक गुप्ता सर विल बी द बेस्ट पर्सन. वी कैन प्लान द लिस्ट. नहीं सर, अभी सेक्स एजुकेशन के ऊपर या सेक्सुअलिटी के ऊपर कोई भी चैप्टर किसी भी सिलेबस में नहीं है. ओके, वी कैन सजेस्ट. सीआई के कोर्सेज हैं उसमें नहीं है. नहीं सर, अभी एक सर मैं आई वुड लाइक टू टेक 1 मिनट ओनली. अभी एक इंसिडेंस हुआ था सर, दिल्ली मेट्रो में एक इंसिडेंस हुआ था. अ मैन entered into the female compartment, he unclothed himself, masturbated and ran away from there. And later when he was caught, he was found a person with, he has got some problems. तो ये चीजें जो हैं, मतलब this is what we have to taught them कि masturbation is not a bad thing, but where to do and how to do it. ये कोई सिखाने वाला नहीं है. गेल, एक चीज और कहना चाहूंगा इसी संबंध में, जो डॉक्टर सिमी या फरीन जी कह रही थी और अभी जो गुप्ता साहब कह रहे हैं. मैं यहाँ बहुत सारे एनलाइटेंड रियल प्रोफेशनल्स हैं स्पेशल एजुकेशन के, बट कैन आई रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ वन थिंग, दैट प्लीज रिमेंबर that even persons with IDD also can have concurrent comorbid psychiatric condition. So sometimes schizophrenia, sometimes OCD, some other conditions may also lead to such behavior. And so that assessment will also be required. वो आसानी से treat हो जाएगा, Gail? Yeah, hello everybody. I'm a special educator, and as Dr. Simi said very rightly, when dealing with children with special needs, basically as a special educator, I may have some experience dealing because I have done a course in mental retardation. But the problem is that, I want people around me to get aware that I want some strategies on how to give this information out to my colleagues in school, because when such an incident happens, it becomes a small incident blows out of place. So it becomes like a child is masturbating or something like that in class 4 or class 5. It becomes a big thing, and everybody talks about it, and then that child's self-respect goes out of the window. So basically, I would like, I also wanted to ask here, what happens if children under the POSCO Act, if such a thing happens in school where a child is molested or something, then does that child be taken into, is the consequences, or is he reprimanded for this, or does it come under a special criteria for this? Gail, can I answer that? Both parts. Yes, please, sir. Can you hear me? Okay. The second part is fairly easy, although uncertain. Like I said a few minutes ago, see, POXO for adult perpetrators or offenders is set out. But provisions of POXO being applicable to anybody under 16 or 18 is one quagmire, not certain yet, especially if there is a person with IDD, if at all. So we'll have to wait for each such case to emerge, and whatever contextual legal arguments happen from lower to highest court. At some stage, hopefully, there will be some consensus on this. Your first part is, I don't know if I understood correctly, but I guess the mix of everything that we said. Firstly, remove individual discomfort, get small groups to discuss if need be. If there are such incidents, okay, can I say this? Having managed other centers, but especially IBAS from old custodial mental hospital to what IBAS is now, one principle that I have followed, learned there as well as earlier is never cover up. Never cover up for legal safety, nor for your own discomfort. So the top leadership of any small or large team will have to have that comfort to bring things to the table and let it be discussed in a decent, reasonable manner. Very often,
not only majority of the staff members will only do whispering and rumor mongering, but there will be very few formal or semi-formal proper discussions. And that's the responsibility of the management or the leadership. So that's to my mind, besides everything else that we have said, is the only way. And I can tell you this, I've lived through the HIV pandemic and was very actively involved at various points of time. Individually, the only way to do it is, I think, if I understood Payalji well, in different contexts, do it. Go ahead and do it. Even when you start or when I start such exercise, we will have discomfort. The only way to do it is to get into it with as much awareness, sensitivity, insight, and acceptance that yes, I am uncomfortable, I may make mistakes, I may offend somebody's sensitivity. You know, wo ehsas, if you keep that in mind. Sorry, we have Napalla also raising hand. Sir, I want to add, Dr. Simi, ma'am, we don't have the teacher even to teach. Okay, we remember we had the teacher like Dr. Rita Peshwaria and all. They were teaching very clearly. They had the no boundaries and all. But which I am finding that we don't find the teacher who can teach. Even we have trained many teachers in Manovikas also. Okay, they will go as a master teacher or something. They will teach. But we have not succeeded much. तो ये हमें एक पूल बनाने की जरूरत भी है. अगर हम एक पूरे नेशनल लेवल पे भी पूल बनाए कि ये these are the sexuality educators, they can work and they have the good kind of knowledge and information they can share. तो ये भी एक कर सकते हैं हम लोग. नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक, वही वाली बात आ जाती है ना, डॉक्टर निमेश जी कह रहे थे कि टैबू जो है, तो एक टैबू ये भी बहुत बड़ा है कि मेरे को जो बात करनी है ये किस बात में, कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, कि जो मेरे सुनने वाले हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आर दे कंफर्टेबल इन वर्नाकुलर और इंग्लिश, कि इंग्लिश में हमको बात करने में कोई शर्म नहीं आती है, मगर जब हम अपनी वर्नाकुलर में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो हमको बहुत शर्म आती है, क्योंकि शब्द जो है वो इस प्रकार के हैं कि हम उनको बोलते हुए हिचकिचाते हैं. तो वो बहुत मुश्किल है कि ट्रेनिंग, हमारे पास में ट्रेनिंग मटेरियल भी हो, मगर ट्रेन कौन करेगा, तो एक टैबू वहां पर आ जाता है. तो सर आई वुड मुद्दा वही है कि हमें कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही है, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही है. जी मैम. Sir, I would like to just share one information. My daughter, she is Shivli Srivastav, and she is a counseling psychologist from Bangalore. She is working for sexuality education, and she is doing really very good. अभी जैसे आपने आलोक सर आपने बताया कि हमारे पास ट्रेनर्स कौन है. She can be one trainer because she is doing really good, and I am trying to take her help into our fraternity जहाँ पे disability and sexuality education, so that we can combine together and get a content material ready for the curriculum aspects, because उसके पास में that aptitude towards talking about the things which we feel as a taboo, it is not there for her, and she is very open, and she is very, like, counseling is something different, so she has got all those caliber and that efficiency is there in her where she can talk. So अभी हम लोग को जो recently we got the award from Rita ma'am, so she was one of my awardee. तो हम लोग self compassion पे जब बात कर रहे थे and talking to parents, and we had this component also कि how comfortable you are with your children when you are talking about sexuality. So they were, I found that she can be the person who can be of help to us in future. And second one was, we are very sorry to miss Dr. Maushmi, because she was doing a real great work on sexuality training, and she was coming up with a manual on sexuality training for intellectually disabled. So we can incorporate such personals, and we can come up with a big manual where we can get training done to all the professionals, irrespective of whichever disability they are coming up. So we can teach them under the banner of this Manovikas, or whoever we want to join. Thank you, sir. Great, ma'am. Thank you. Napreet, could you please unmute yourself? Yeah. Hello. I know a family जो educated है enough, but बहुत conservative है. They have a daughter who is 23 years old.
और वो मतलब कंप्यूटर सीखती है और कुछ ऐसा कुछ कहीं पे भी जाती है तो शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेल टीचर। तो मदर उसको विड्रॉ कर लेती है कि उसको एक्सपोजर नहीं देना चाहती ज्यादा, कि अगर उसको एक्सपोजर मिलेगा तो कोई उसका फायदा ना उठा ले या हार्ट ब्रेकेज ना हो। तो मतलब व्हाट इज द राइट वे कि उसको लिमिटेड उसके बाउंड्रीज में रखा जाए या फिर उसको एक्सपोजर दिया जाए या प्रॉपर एजुकेशन सामने वाले को भी दी जाए? कैसे उस चीज को हैंडल किया जाना चाहिए कि उसको एक तो है कि हम अगर एक्सपोजर नहीं देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो वहां पे ही रुक जाएगी। दैट मीन्स आई वांट टू क्लियर दैट। ओके, देसाई सर, आर यू हियर? नहीं रहे अनुति, आप बोलेंगे? नहीं, देसाई सर है नहीं ना अभी, लग नहीं रहा। ओके, सी कोई एनीवन कैन आंसर, whoever you want. Yeah, please. डॉक्टर साहब, मैं ये सोचता हूँ, डॉक्टर आलोक, जो नवप्रीत जी ने कहा उसमें मैं ये सोचता हूँ कि पहले तो you have to study the tendency of the girl, number one, their home atmosphere, उनका घर का वातावरण कैसा है, वहां पर उसके ऊपर क्या क्या बंदिशें लगाई जाती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में हम बहुत ज्यादा बंदिशें लगा देते हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। एंड व्हेन द चाइल्ड इज ही गोज आउट, ही इज सेट फ्री, तो उसमें वो चेंजेस आती है। तो वो स्टडी हमको करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड इज कि उस बच्चे को हमें ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा अगर उस बच्चे की हमको जिंदगी बचानी है। सर, थर्डली बात जो आ जाती है, वो जहां भी मेल प्रोफेशनल्स के पास में जाती है, उनको हमें बताना है कि भाई इसकी ऐसी आदत है, आप थोड़ा बच के रहिए। मेल पर्सन हैज टू बी, जो काउंटर पार्ट है उसको भी हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि कैसे हमको इसके साथ में डील करना है, हाउ वी हैव टू मेक द डिस्टेंस। सिमी जी कुछ कह रही हैं? Yes. Just sir, there's one thing which I would like to add here. Basically problem क्या है? Problem ये है कि वो parents जो है वो अपना attitude उस बच्चे पर थोप रही है। वही मैंने कहा था ना, हमें कोई स्टडी करना पड़ेगा पहले। हाँ, अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ हमारे यहाँ। We had a great scientist who came to visit Manovikas. और एक ऐसे ही पेरेंट थे और उन्होंने अपना व्यू उसके साथ रख दिया, और वो साइंटिस्ट ने इतने अच्छे से उस पेरेंट का उतारा कि वो अपने लाइफ की सारी घटनाएं उस बच्चे में देख रहे थे कि अगर उसके साथ जो भी कुछ हो सकता है, कि हमारे साथ रेप हुआ था या हमारे साथ कुछ और हुआ था या हमारे साथ मिसहैपनिंग हुआ था, कहीं वही चीज मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए, या फिर उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो उसने ऐसा काम किया था, तो वो ये सोच रहे थे कंप्रिहेंसिव भी कहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा काम ना हो जाए। तो कभी कभी हम पेरेंट को डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ पर हम चूक जाते हैं एज ए प्रोफेशनल टू टेल द पेरेंट्स कि दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग। सो वी हैव टू टॉक डायरेक्टली टू द पेरेंट। कभी भी नवप्रीत जी, अगर ऐसी स्थिति आए तो हम पेरेंट्स को कहने में शर्माए ना, और जब हम शर्मा जाते हैं तो वहां पर ही चूक जाते हैं। सबसे पहली बात हम उसको पेरेंट को पूरी तरह से समझा दें कि ये गलत है और ये सही है। और आपका 80% मैं देख रहा हूं कि वो जिस दिन से वो साइंटिस्ट ने उस पेरेंट के साथ बात किया, उस पेरेंट का भी हाव भाव बदल गया, उस बच्चे का भी हाव भाव बदल गया, और मैं देख रहा हूं कि वो जो इशू था वो बहुत दूर दूर तक चला गया। तो कभी कभी हमें खुल के बात करनी चाहिए पेरेंट से भी। जी सिमी मैम। सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि जब तक हमको पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ में डिटेल चर्चा करें और बच्चे के आवश्यकता अनुसार बाउंड्रीज को डेफिनेटली हमको बताना होगा उनको, क्योंकि जब तक हम बाउंड्रीज नहीं तय करते हैं तब तक हम बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ट्रेनिंग शुड भी, जो हम बोलते हैं, एज अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो नीड अप्रोप्रिएट। तो इस चीज़ को फोकस करके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके डेफिनेटली वी कैन टीच वॉट एवर काइंड ऑफ गुड बिहेवियर्स इन द चाइल्ड। तो जो मैडम जो बोल रही थी कि बाउंड्रीज को टीच करना चाहिए है कि नहीं, डेफिनेटली वी नीड टू टीच द बाउंड्रीज ऑल्सो, बिकॉज
Without those boundaries, I don't think so the children will be able to differentiate or discriminate between what is good and what is bad. This is what I just wanted to convey. Thank you. Yes, Kanika. Kanika ji. Yeah, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes. Yes. Yeah, good afternoon, everyone. So the topic is very, very, it is the need of the hour, the topic you have chosen, because I was also getting the query how to handle sexual issues among people with disabilities. But, I've worked with special children as well and normal children as well. So talking about sex is a taboo. So even normal school teachers are not ready to talk about sex education. Principals, nobody wants to talk about it. So I think we need to make a curriculum. Maybe Manovikas can be one of the platforms where people like us can be trained, or you can, create your own curriculum. We can be trained and start a campaign to create sexual awareness amongst parents, youngsters. So group wise, we can, make a curriculum कि कैसे हम छोटे बच्चों को good touch bad touch हम बात करते हैं, but good touch bad touch is not clear amongst kids even now, especially in 2-tier cities. तो हम अगर हम एज रेंज बना के हर सेट्स ऑफ ग्रुप का हम बना ले करिकुलम और उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम रन करें along with parents and teachers, because just telling students will not help us, only telling parents will not help us, only telling teachers will not help us. So they have to come together. And also when we talk about the person who will be delivering these education, they also need some kind of formal training. So whatever I do, I know कि हमें sex के बारे में बात करना चाहिए. It's okay, we should teach कि कहाँ पे करना है. When we talk about masturbation, तो बच्चों को बताओ, you can do it, but in a private area, or maybe you can just do it in your room or a toilet. But again, I am not the professional. I have my own limitation. So again, NGOs like Tarshi is working on sexual education since long time. So you can have a tie-up with these people so that we get the correct information, what to tell and how to tell. And we can, make a group of our own, because 105 people are listening to this workshop. See, maybe Manovikas can take the initiative. Yeah. Great. We can. Why not? Aruna ji, please. Thank you, sir. Yes, sir. As Kanika ma'am had rightly pointed out that this issue is totally relevant for the normal, as so-called normal kids also. Because your voice is breaking. Yeah. Here? Yeah, now you please tell. Yeah. Yes, sir. Post-pandemic is related to sexual issues, like the children are addicted to porn or addicted to different sexual acts. So this is a very relevant issues these days post-pandemic. We really need to address. So I'm trying on my best. I had recently completed a sexual wellness coach program from Feeling Minds, and then I feel equipped, but I feel there has to be some curriculum which we can take up and your voice is breaking. Unka net gaya. Yeah. Ujjwala ji, you can continue. Yeah, please. Unmute yourself, please. Unmute yourself. हाँ, हमारे मनोविकास स्कूल के द्वारा क्या हम पार्टनर फॉर सेक्सुअल हेल्थ इस तरह से कुछ शुरू कर सकते हैं क्या? Definitely, we are planning, and we had little more, we have some experiences also. तो अभी हम लोग बना रहे हैं, and then definitely we will make a great network, and we will include all the interested persons. So maybe very coming soon, maybe in a month and so, we will come with something strong. Thank you, sir. Gupta sir, I think. So sir, I extend my heartfelt thanks to Dr. Nimesh Desai
for enlightening about the framework available and the taboos available with us around us, कि किस प्रकार से हम लोग हिचकिचाते हैं और अपनी भाषा में बात करने के लिए हम बहुत शर्माते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम दो आदमी मिलेंगे तो दो आदमी बात कर लेंगे, दो लेडीज मिलेंगी तो वो बात कर लेंगी, मगर देयर आल्सो विल बी हेजिटेशन इन टॉकिंग देयर ओन लैंग्वेज। जो अपनी भाषा में है वहां भी हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू द पार्टिसिपेंट्स आल्सो, जिन्होंने आगे आके बहुत अच्छी बातें हमारे को बताई एंड दे वर रियली यूजफुल। अच्छा टेक अवे अच्छी चीजें थी हमारे पास में एंड वी अश्योर दैट वी इट्स नॉट ओनली कि हमने सिर्फ नोट करके रख लिया, वी ट्राई टू वर्क ऑन दैट। तो इन्हीं के साथ में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ